This conference will now be recorded. Welcome you all to the training session on the steel wire manufacturing technology. It's the day 3. What we are going to do today is quickly go through what we have learned yesterday, है ना? And then we will start today's session. So I think by that time, few people will also join in. So in the first section of steel making, what we have learned yesterday is different types of ages. That is, there was a stone age, then bronze age, and then comes the iron and steel age, which is still going on. It means that we are using iron and steel extensively for utensils, day-to-day life, weaponaries. So it is abundantly and popularly used. So this is a iron and steel age. Whether it's a construction, whether it's a vehicle, whether it's a domestic tools, utensils, you can find the iron or steel everywhere. That's why it is called steel age or iron age. We have also learned yesterday that the first known steel was not from the earth, it was came from the sky, that is in the form of meteorite, which is called as the meteoric iron dagger, meteorite iron. It has having higher amount of the nickel, and then people started to they came to know that yes, it is available in the form of iron ore also in the earth, and then they started slowly smelting the iron. Then there was a cast iron around 500 BC built in China, and as we discussed yesterday, there was a wood steel discovered or invented in South India, and it has been shipped across all over the world. Damascus sword, it is famous for that one, containing 1 to 1.6% of carbon. Then we also discussed yesterday about the famous iron pillar in Delhi. It is almost 1700 years old. Still, it is rustless. It's a marvel in the metallurgical field that how our ancient peoples are able to make such a material that is resistant, so much resistant to the corrosion. It is almost 6.5 tons of weight. Then we learned about what is wrought iron. Wrought iron is basically having very low amount of carbon, that is 0.08%, and it is very ductile. Lower the carbon, higher will be the ductility. Higher the carbon, higher will be the strength. Then we learned about the blister steel, the wrought steel, which is having low carbon. It is heated again and again in contact with the coal or any carbonous matter, so that carbon can be penetrated to that steel, and which gives it more strength. So the blacksmith, if any one of you have visited the blacksmith, you can see that yes, they are putting that tools, farm tools or anything inside that coal bed. And then there is a pig iron, or we can say crude iron, which is output from the blast furnace. It has having around 3.5 to 4.8, or you can say about 3.5% of carbon. Because of that, it cannot be used as it is for industrial applications, barring few applications. And it's a brittle in nature. So what we have to do, we have to use the primary and secondary steel making processes to get the desired steel. Then we learned about the various classification: low carbon steel, medium carbon steel, and about the high carbon steel. Brief overview of the steel making process we have seen yesterday. Now what we are going to do today is learn each and every process in detail. Okay, because this is the overview. What we have gone through yesterday was a overview. This complete is a overview. Now you people have a complete picture that yes, there is a iron ore, there is a coke, and there is a limestone, and few names like blast furnace, DRI, electric furnace, oxygen, basic oxygen steel making. Okay,
So all these things you know now. And then there is a billet, blooms, slabs, thin slabs. So now that picture, complete picture is in front of you. Now we will go in detail so that you people now have a complete linkage. So today what we are going to do is learn about the, as I said, clause of confidentiality will be a integral part of each and every day session. So today also I am going to repeat that. Then we will learn about the blast furnace. Okay, details of blast furnace. Then iron ore, various types of iron ore, where in the world largest amount of iron ores are there, or which countries maximum iron ore is there. Then iron ore processing, what kind of processes are being done on the iron ore. Because as you get it from the earth, the mined iron ore, you cannot use directly into the blast furnace or next processing. You have to do some processing on the iron. So what is that processing? That we will also learn. We will learn slightly about limestone. There is nothing too much, but as it is going to the blast furnace, you should know what is limestone and why it is used. Everything is going inside a process. There is some significance. There is some importance of that particular thing. And if it is of no importance, then why to use that one? So if you are using anything inside the process, it means that it has a significance. Okay. Then we will learn about the coke oven plant, because yesterday I told you in the blast furnace you are going to use iron ore, limestone and coke. So you should know about the coke also, coke processing, how the coke is made, है ना. कोक ओवन फर्नेस क्या होती है, कोक कैसे बनता है, वो आप लोगों को बताऊंगा. And then we will discuss about the DRI process also, that is direct reduced iron. So basically, if I go to this picture, what we are going to cover today is this area. Yeah? Because there are two routes, one through the blast furnace, another using the direct reduced iron and then electric arc furnace. Or you can use this route, go to blast furnace and then go to basic oxygen furnace and refining, or you can have all these things going to the DRI plant and which is fed to the electric arc furnace. So why DRI route has been evolved or people started focusing on the DRI also I will tell you, but still the largest production is through the blast furnace only. है ना, जो बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है, it is through the blast furnace route because of the capacities it has. Then we will also see which is the biggest blast furnace in India. So today we are going to cover all these things in this section, and then tomorrow the next process. So let us start. So clause of confidentiality, as I told you all people, the training content, few of the content and the pictures, because I cannot go to the each and every location and take the picture. So these pictures are sourced from the internet in good faith, for the training purpose. But it can be of any proprietary nature. Wherever required, I have given the due credit from where it has been sourced. So you people are requested not to share the presentation or the video recording on any of the public platforms. Keep it to yourself, use it for your knowledge. As much time you want to see repetitively, you can see, but please do not post the presentations or the videos anywhere. Even the small content of the video also, please do not put it on any of the public forums or public platforms. No Facebook, no WhatsApp sharing, no LinkedIn, please. Okay. So now coming to the blast furnace. कल देखा था हमने blast furnace. Okay. So blast furnace हमने कल देखा.
तो ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों बोलते हैं? पहली बात तो व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस? एनी आइडिया? एनीबडी कैन टेल व्हाई इट इज अ ब्लास्ट फर्नेस? Let us make some interaction. Any idea? Anybody can tell why it is blast? What is blast basically? Blast क्या होता है? Spread of fire with the help of oxygen. हाँ, तो spread of fire you can say pure Hindi is the धमाका, है ना? So where the dhamaka is taking place, and because of what? Because you are putting the hot air plus O2 sometimes through the furnace here, and because of this blast like phenomenon takes place there, and because of that the melting process takes place. That's why it is called a blast furnace, because the hot air is blasted inside this furnace. That is a blast furnace. ये almost 60-70 मीटर हाइट की होती है. You people please have a closer look to this picture. What you can observe, you just see here. So ये जो तीन चीजें हमको इसमें डालना है ना? आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड कोक. बट आयरन ओर आप एज इट इज नहीं डालते हो. लंपी आयरन ओर जो रहता है रिक्वायर्ड साइज का, वो भी डाल सकते हैं, बट उसके पहले उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग जो होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. सो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? वी हैव, आपको इसके अंदर, मुझे आप एनीबडी कैन टेल मी लेयर्स कुछ दिख रही है इसके अंदर आपको? हर एक जन अपना कोई, यू पीपल प्लीज टेल मी ना व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस ब्लास्ट फर्नेस पिक्चर. व्हाट इज देयर? लोडिंग कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम वेयर द लोडिंग टेक्स प्लेस? Anybody can tell me from where the loading is taking place? The metallic load. But from where? Which position the loading is there? Left side. Above. Yes, from the top side. Vertical. Here, Vertical. yeah. So from here there is a loading. What you are loading? है ना? मेटेलिक लोड, मेल्टिंग मटेरियल, कोक जो है वो सब हम उसके अंदर डाल रहे हैं. अब नीचे आएंगे तो यू विल सी टू काइंड ऑफ लेयर्स आर देयर. Two kind of layers are there, na? One is of the ore and one is of the coke, है ना? आयरन ओर एंड कोक. और साथ ही साथ उसके आपको क्या रहेगा? लाइमस्टोन भी रहेगा, है ना? सो जब आप यहाँ से हॉट एयर ब्लो करते हो, और इट इज नॉट ओनली 2 टीयर्स, ऑलमोस्ट 20, 30, 36 टीयर्स तक भी रहते हैं. भिलाई स्टील प्लांट का जो BF8 है, आई विल शो यू हाउ मेनी टीयर्स आर देयर, बट इट इज पिक्चर में, बिकॉज इट्स अ फ्रंट व्यू ओनली, क्रॉस सेक्शनल व्यू ओनली, so you can see only 2 tiers. Tiers means which is blowing the hot air and oxygen inside. Okay, so it is called tiers, and there are number of tiers, circular, पूरे ऐसे सर्कल में tiers रहते हैं. And because of that hot blast आपको वो शेप दिख रहा है ऐसे कोक का एंड ऑल दिस. और वहां पे जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होगा? इट विल हैव मेल्टिंग इफेक्ट हियर. दिस इज द मेल्टिंग एरिया, सॉफ्टनिंग एंड मेल्टिंग एरिया. और फिर यहाँ से परकुलेट होके यहाँ पर जमा होता है. ये टॉप में क्या होता है? देन व्हाट विल बी देयर इन द टॉप? टॉप में क्या रहेगा? फ्लोट क्या करेगा? Slag. Impurities. Yes, impurity, slag. Yes, because of the low density compared to iron, the slag or the impurity will float on the top, है ना? Basically majority it will have silicate and calcium silicate, and नीचे जो रहेगा it will be metal रहेगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ब्लास्ट फर्नेस में से? slag निकालोगे कि मेटल निकालोगे? It's a general knowledge question. What you will remove first? You will remove the slag or you will remove the metal? So we would remove the slag. Slag first. Why? What will happen if you remove the metal first? Sir, it's not possible, sir. We have to first remove the slag.
Otherwise, if you remove the metal, then that slag will come into the metal area, and then you cannot Yes, sir. completely remove that one. So that Yes, sir. tapping will be from the first. You will have to remove the slag, and it is not only the single tapping. There will be multiple tappings out of that blast furnace for the slag also and for the metal also. So this is a basic structure. You can see that yes, from the top you have to feed the material like iron ore, limestone, and coke. Then there is a hot air blast from the bottom, and because hot air is there, coke will burn, and then it will start the reaction. Okay, the reaction भी हम आगे में देखेंगे what reactions are there. और एक व्यू है ब्लास्ट फर्नेस का, ये आपको और क्लियरिटी देगा. इट विल बी हैविंग डबल फीडर, क्योंकि टॉप में से ऐसा तो नहीं है कि आप चलती लाइन में डालते जाएंगे. एंड वॉट एवर द फीडिंग विल टेक प्लेस, दैट इज थ्रू द कन्वेयर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 60 to 70 meters high. From the bottom 60 to 70 meters high means almost 200 plus feet पे रहेगा. ओके, सो दैट 200 प्लस जो फीट रहता है उसको आप कैसे मैन्युअली तो डाल नहीं सकते है ना, तो कन्वेयर बेल्ट रहते हैं, कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट चलते रहते हैं, वहां से वो फीडिंग होता है. एंड देयर आर 2 हॉपर, ठीक है ना. एक हॉपर किसका रहता है, कोल का, एंड अनदर इज द आयरन ओर का, है ना. तो यहाँ से आपको क्लियरिटी आ रही है. अभी आप मुझे बताइए कि इफ दिस वेरी स्मॉल, इसके आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द थ्रोट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, मीन इसका गला है. गले से क्या होता है, फ्रॉम द थ्रोट व्हाट वी डू, वी विल ईट ना, जो प्रोसेस होता है या तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है बेली में, वहां पे मटेरियल कहाँ से जाता है, थ्रू द थ्रोट ओनली, by way of throat. So this is the throat of the blast furnace, and the big portion, everybody is struggling with the belly now, fat belly. So that big portion here is a belly of the blast furnace, and then from here to here it's the stack. This zone is called Bosch, and the last one at the bottom is called the hearth. अभी आप देखिए स्लैग का जो पोजीशन है, टैपिंग, स्लैग का टैपिंग कहाँ पे है, टॉप में दिया गया है. एंड पिग आयरन का या फिर जो भी मेटल का टैपिंग रहेगा वो कहाँ रहेगा, इट विल बी एट द बॉटम साइड, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी हियर brick work is there, and there is a water cooling pipeline also going throughout that because of the enormous temperature there. Because of the enormous temperature there, what is happening, that cooling coils are placed. Otherwise that brick lining will get damaged. और पूरे brick lining को क्या रहता है, because it's a refractory brick, that refractory bricks are designed or manufactured to withstand higher temperatures, है ना. कोई भी क्रूसिबल रहे या फिर क्रूसिबल रहता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का रहता है, जो हमारा पैटेंटिंग फर्नेस है उसके अंदर भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल रहता है. दैट रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज the blue dots are the water cooling pipe. The blue dots at the end. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the water cooling. Okay. Okay. So this is a, now क्या होता है इसमें जब फीड करते हैं, क्योंकि when you start removing the metal, this charge started to come down, है ना. जैसे जैसे आप निकालते जाओगे तो this charge started to come down. ओके, एंड अगर आपका चार्ज नीचे आ रहा है तो यू हैव टू फीड, तो इसकी साइकिल रहती है एक बार एक, है ना. और फिर जब आप फीड करते हो तो नीचे का फीड करते हैं, देन ऊपर का फीड करते हैं, दोनों क्लोज हो जाती है, बिकॉज ये हॉट एयर जो रहती है यहाँ की, है ना, जो भी उसमें से निकलता है, कंबशन प्रोडक्ट निकलता है, CO2 निकलते हैं, इट विल गो टू दिस through the pipeline, because that CO can be used, blast furnace gases can be used for further heating process also. अगर वहां पे कोई boilers है
या दिस वॉकिंग बीइंग फर्नेस जो रहती है फॉर हीटिंग द बिलेट, उसमें भी ये ब्लास्ट फर्नेस गैसेज यूज करते हैं for the burning, because it contains CO also, and when you can burn always CO to generate heat. So CO will burn in presence of oxygen to give you the heat. Okay, so this is the, yeah. So these gases, what's the temperature of these gases? Flue gases, you are saying? The gases which are erupting from above, what is the temperature? It will be almost 800 degrees centigrade plus, around 800 degrees. Okay, sir. Yeah, but that gases will not directly use for the heating. That gases will burn because it's having coal जब जलता है तो it will have CO also. CO2 भी बनता है, CO भी बनता है, and CO is basically unburnt condition. So when you burn it in presence of oxygen, it will give you the heat. So it can generate heat. Blast furnace gases. Yes. Okay. So this you can see how it will look, because here you have seen only the cross section of the blast furnace. This is the blast furnace BF8 at Bhilai Steel. So this is the largest one in India. उसका वॉल्यूम कितना है? इनर वॉल्यूम है 4060 मीटर क्यूब, है ना? तो 4000 लीटर की कैपेसिटी है उसकी इनर वॉल्यूम, और हर्थ डायमीटर कितना है? हैविंग 13.4 मीटर. जस्ट इमेजिन कि दैट हर्थ इज हैविंग 13.4 मीटर, मींस अराउंड 40 मीटर का 40 फीट का 40 प्लस फीट का दैट हर्थ इज देयर. So how much tremendous amount of hot metal it will carry, and how many tap holes are there? As I told you, there will be multiple tap holes. So there are 4 tap holes. And how many tuyers? Tuyers means from where you will blow the hot air and oxygen. वो कितने हैं? 36. Tuyers कहाँ पे located है? This one. These are the tuyers. Okay. These are the tuyers. ये मैं रेट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है? Yes, sir. So these are the tuyers already, and tuyers are across the circumference of the earth. And how many are there? There are 36 total tuyers are there. And this side is the top of this one. ये इसी का top है ना? Same furnace का ही top यहाँ पर है. So ये क्या दिख रहा है आपको? This is a conveyor belt. Conveyor belt से क्या होगा? Feeding होगा into the top of the furnace. तो उसको खाना कहाँ से जा रहा है? It is going through this position. Okay. And how many tons of hot metal it can produce? Every day it can produce 8,000 tons of hot metal daily. Got it? So it's the 8,000 tons of hot metal daily one furnace can produce. And this BF8 means Bhilai Steel Plant has, when I visited, it was having almost 7 furnaces. 8 furnace was going on that time. When we went to Raipur, this is in Bhilai. So when we went to Raipur for one QCFI competition, from there we visited this plant, and that time there was some commissioning going on. It was commissioned in 2018, I think, in India. So that time this was going on. This is a blast furnace 8. So they were having 7 already, and this is the 8th one, the biggest one. Okay. So this is about a blast furnace structures and the working basically. Now we will go to the ingredient which is going inside the blast furnace. And which are that ingredients? क्या क्या डाल रहे हैं blast furnace में? Anybody can tell me? Can anybody tell me please? So metallic iron ore. Yes. Then what you are putting again? Limestone. Limestone. Yes. And coke. Yes. Oxygen. So वो तो आप ingredient जो डाल रहे हो, oxygen is basically oxygen and this hot air you are blowing from the tube, है ना? But ingredients what we are putting in some solid form is only 3 ingredients:
iron ore, whether it's in the pellet form, sintered form, or as it is coke and limestone. This thing you have to put. Okay. So now we will deeply go through iron ore. अभी iron ore बोलने से नहीं होगा. How many types of iron ore are there? And what is the content of iron in that particular ore? ये तो है नहीं कि मैंने 1 टन आयरन ओर लिया और 1 टन बन गया. That will completely depend on the iron content in that particular ore. So अगर for example कोई हमको you have to stitch a shirt, and that particular material what we have, if the defects are there, then to sew that or to stitch that shirt, you will require more of the cloth, because defects are there or impurities are there. Same way here also, if iron ore there is a impurities, more number of impurities or gangue material, they are say GNGV, gangue material, then your throughput or output will be lesser and quality of the product will also not good. So we will go through different types of iron ore, and every iron ore has some different characteristics also, iron content also. So, yeah. So what is gangue material? Impurities. We will come to know that next when we go through the iron ore, na? Impurities, because iron ore is an oxidized form found in the earth, so you cannot just get the iron oxide only, na? There will be some impurities also, because that iron ore is formed over because of some compression and all these cycles over a period of millions of years of time. How the coal is formed, by when the wood and everything is buried inside in the Martian land, or because of any big changes in the earth crust, and because of the high pressure, the wood converted to coal. Same way, iron ore also is built over a period of time in the earth crust. So coming to the iron ore, it is a natural occurring because it is not artificially made. It is present in the nature, so we can say it's a natural occurring substance, and it is found as a compound in the rocks. So where it is found, like ऐसे कभी भी हमको कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना? It is like a compound and in the rocks. तो इसकी कंटिन्यूटी रहती है, ऐसे बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं, बड़ी बड़ी माइंस रहती है फिर इसकी, एंड जो फेरस रॉक्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ आयरन ओर. तो इसमें जो मेजर है, इट इज मेजोरिटी जो रहता है, इट इज आयरन ऑक्साइड, बट आयरन कार्बोनेट्स भी रहते हैं एंड आयरन सल्फाइड्स भी रहते हैं. So it is not only iron oxide ore, there will be iron carbonates also, like siderite, which is FeCO3, and pyrite, which is ferrous sulfate. So it can be found in the form of oxide, iron oxide, as well as in the form of iron sulfate or iron carbonates also. ये जो टॉप के दो है, it is having very high content of iron, Fe3O4 and Fe2O3. There are six iron ores: magnetite, hematite, goethite, limonite, siderite and pyrite, which is FeS2. कहीं पे आप देखोगे कुछ इंटरनेट सोर्स में या बुक्स में ओनली 1, 2, 3 और 4 के बारे में दिया जाएगा, कहीं पे कुछ स्किप हो जाएंगे, बट दीज आर बेसिकली 6. आयरन कंटेंट जो रहता है मैग्नेटाइट और हीमाटाइट में सबसे ज्यादा होता है. आउट ऑफ दैट मैग्नेटाइट इज हैविंग द हाईएस्ट, 62 to 72%. एंड हाउ इट लुक्स, मैग्नेटाइट कैसे दिखेगा? इट लुक डार्क ब्लैक कलर, है ना? तो दिस इज अ magnetite ore. How it look? It a dark black. Then coming to the hematite, which is Fe2O3, 60 to 70% iron रहता है उसमें, and which looks like a
gray and reddish, है ना? So it will be reddish gray color. Again coming to the goethite कैसे रहता है? It is called it is goethite, and again it looks similar to this one, but the structure is little bit different. It has a reddish color, reddish brown. Then coming to the limonite, which is having yellowish brown color. This is the limonite. This one is the limonite, which is twice Fe2O3 H2O. तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन मीन्स वाटर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है. Okay, so moisture content will be there. Then siderite, only 48% of Fe. It is called low grade iron ore, FeCO3, iron carbonate, ferrous carbonate you can say, and it looks like this one. And the pyrite, which is FeH2, ferrous sulfide, sorry. It is 46% iron is there, and it is also known as the fool's gold. आपको इसका अपीयरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा गोल्डन कलर का रहता है ना? तो कई पे इसको फूल्स गोल्ड भी बोला गया है. लोगों को लगता है कि गोल्ड है, पर एक्चुअली गोल्ड नहीं रहता है, या लोगों को लगता है इट्स अ गोल्ड ओर, बट इट्स अ पायराइट, है ना? नाम भी वो पायरेट के साथ ही मिलता जुलता है इसका. Yeah. Sir, the limonite and siderite and pyrite, which of the following, which one is having more moisture? Moisture will be here in limonite because bonding so is there, H2 is there. Why not siderite? Yeah. Why not? Why not siderite? Siderite, because there water bonding is not there in their formula itself. The water of crystallization is not present in that formation of siderite. Here you can say there is a water of crystallization, one H2 is there. But in case of siderite, pyrite or other, there is no water of crystallization present. Okay. Okay. So this is about the iron ore. So you have to remember mostly all the things, but magnetite, hematite are abundantly used because of its purity. Now coming to the worldwide ore deposits, because इसका सोर्स कहाँ पे है इंडिया में? मतलब इसका जो कोरिज है कहाँ पे ज्यादा मिलता है? वो आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में आएगा मंडल जी. है ना? ओडिशा, कर्नाटका, है ना? ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है. मेरे आगे में डाला है, आगे साइड में है सभी उसका. झारखंड आप देखोगे बहुत सारी माइंस उधर ही मिलेगी आपको. ओडिशा में तो जो प्रोडक्शन है इट इज ऑलमोस्ट 50%. तो वी विल कम टू दैट, है ना, आफ्टर द वर्ल्ड. टोटल वर्ल्ड डिपॉजिट देख लेते हैं पहले. आप इसमें जो आपको रेडिश दिख रहा है, सबसे तो जो ब्राउन कलर है ना, तो 900 मिलियन टन तो चाइना में ही है. ओके, हाउ मच? 900 मिलियन टन. ये 2010 बेस का सर्वे है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, उसके डाटा के अकॉर्डिंग है. अब वो कम हो गया होगा, हो सकता है कुछ बढ़ भी जाता है, बिकॉज यू ऑलवेज स्टार्ट, जो जियोलॉजिकल सर्वे होते रहते हैं और उसमें आपको नए नए डिपॉजिट्स मिलते भी रहते हैं. बट यू कैन सी that China is having the largest deposits of iron ore. 900 मिलियन टन है उनके पास चाइना में, है ना. तभी भी इंपोर्ट करते रहते इधर उधर से, जस्ट टू सेव देयर रिसोर्सेस ऑल्सो. देन जो रेड है, रेड को देख के आपको कुछ लग रहा है कौन सी कंट्रीज है ये? बेसिकली जो आयरन ओर अगर आप देखोगे, एक कंट्री का ग्रुप है. देयर इज वन ग्रुप ऑफ कंट्रीज, है ना, जैसे सार्क रहता है वैसे और एक कंट्री का ग्रुप है. आप उसके साथ रिलेट करो, बिकॉज रेडिश आप अगर देखोगे मैक्सिमम जो कंटेंट है, मैक्सिमम आयरन ओर डिपॉजिट्स है, इट इज प्रेजेंट इन फ्यू कंट्रीज ओनली. तो क्या कंट्रीज है? ब्राजील, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया.
हाँ, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, चाइना को ले लो, तो क्या होता है, विच कंट्री, विच ग्रुप ऑफ कंट्री इट इज, दे हैव वन एसोसिएशन, व्हाट इट इज नोन एज ब्रिक्स। ब्रिक, है ना। तो जो मैंने सर्कल उसको करके रखे यहाँ पे, तो अगर ब्राजील, आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, ब्राजील, है ना, रशिया, इंडिया एंड चाइना, सो दीज आर द ब्रिक कंट्रीज, है ना, ब्रिक्स एसोसिएशन है इनका। सो इसमें देखिए आप, तो इनके पास सबसे ज्यादा आयरन ओर अबंडेंस में है। इंडिया में भी कम नहीं है ना, इंडिया इज हैविंग ऑलमोस्ट 260 मिलियन टन, इवन लार्जर देन द दिस वन योर रशिया। और ब्राजील में इंडिया से ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है, ऑलमोस्ट यू कैन से 80% मोर अपने यहाँ से वहां पर। और इसलिए वहां पे जो माइनिंग इंडस्ट्री भी है बहुत ज्यादा बूम में रहती है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत जगह पे ओर्स जो है जाते हैं, नॉट ओनली द आयरन ओर, अदर भी ओर्स है वहां पे अबेंडेंस में है, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज अ वर्ल्ड वाइड पिक्चर। So to remember easily, you can say BRIC, that is Brazil, Russia, India, China, and you can add the Australia to that one, that they have the maximum iron ore deposits. Clear? और जिनके पास ओर है तो स्टील भी बना सकता है, बिकॉज ओर आप इंपोर्ट करोगे, सो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर, बिकॉज यू हैव टू ऐड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। बट इफ यू हैव इन इंडिया, दैट्स वाई आप देखोगे कि जो मेजर मेजर स्टील प्लांट है कहाँ पे रहते हैं, जहां पर में क्या आयरन ओर मिलेगा उसके आजू बाजू ही रखते हैं वो ब्लास्ट फर्नेस वगैरह। अदरवाइज वो वहां से वहां ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट लगेगी, इट विल बी वेरी हाई कॉस्ट। अभी इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। सो मेजोरिटी कहाँ पे बताया मैंने, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। एक्चुअली हर स्टेट में थोड़ा ना थोड़ा तो आयरन ओर डिपॉजिट मिलता ही है, बट ये जो स्टेट्स है इनका मिला के ऑलमोस्ट 90+% तो इन्हीं 7-8 स्टेट में है ना। ये जो 7 स्टेट दिख रही है, दैट टोटल जो इंडिया का डिपॉजिट है, और उसमें से 90%, 95% में भी इनके पास ही है। और हमारे पास जो है हीमाटाइट और मैग्नेटाइट लार्जली फाउंड होता है। और हीमाटाइट और मैग्नेटाइट में आयरन परसेंटेज कम है कि ज्यादा है? जस्ट 2 स्लाइड पहले देखा है हमने, ज्यादा है। ज्यादा इट्स अ यस प्योर फॉर्म ऑफ द ओर। सो इन इंडिया लार्जली क्या मिलता है, हीमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, विच इज अ प्योरेस्ट ऑफ द आयरन ओर्स। और ओडिशा में जो प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉट द डिपॉजिट, कितना होता है, जितना इंडिया में टोटल बनता है ना, आउट ऑफ दैट 50% इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओडिशा ओनली, whereas कर्नाटका हैज द लार्जेस्ट आयरन डिपॉजिट, आयरन ओर डिपॉजिट। और वहां का जो ओर है दैट इज ऑफ अ हाई क्वालिटी ओर ऑल्सो, बिकॉज इवन इफ यू हैव द हीमाटाइट, बट इन कंजंक्शन विद दैट, if you have some other impurities, more of the impurities, then quality, the grade of the ore will be lower. झारखंड के पास ऑलमोस्ट 25% आयरन डिपॉजिट है, आयरन ओर डिपॉजिट है, और छत्तीसगढ़ के पास 18%। झारखंड में कहाँ कहाँ पे है, नुआ मुंडी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नुआ मुंडी एंड गुआ करके जगह है, नॉट गुआ, गुआ, नुआ मुंडी एंड गुआ में उनकी मेजर माइंस है वहां पर। और छत्तीसगढ़ में बस्तर का नाम सुना होगा आपने, और दुर्ग, भिलाई, है ना, यहाँ पर 18% डिपॉजिट है छत्तीसगढ़ में। सो आप अगर देखो ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, यही बहुत ज्यादा हो गए इनके तीनों के डिपॉजिट की। और जो चिरिया माइन है झारखंड की, उसके अंदर बोलते हैं कि लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट है इन द वर्ल्ड, मींस एक पर्टिकुलर माइन में जितना डिपॉजिट रहता है ना उसका। तो 2000 मिलियन टन
का आयरन ओर डिपॉजिट यहाँ पर लोकेट किया गया है बोल रहे हैं, जो लेटेस्ट इसके हिसाब से। गोवा जो है, गोवा में भी आयरन ओर मिलता है। बीच में कुछ न्यूज भी आई थी कि वी हैव इन disguise of the iron ore we might have supplied or we might have exported some very high value ores also. Okay, so गोवा से जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो होता है गोवा से होता है अपने यहाँ से आयरन ओर, है ना, एंड इट इज गोइंग टू द चाइना एंड जापान। Excuse me, sir. हाँ या Sir, sir, as you have visited the Bhilai plant, Raipur, sir, हाँ how much percentage of total iron ore production does the Bhilai plant have? विच वन आयरन प्रोडक्शन? Yes, sir. नहीं, मुझे वो आइडिया नहीं, मैं निकाल के देना पड़ेगा, मुझे उतना याद नहीं मुझे। Okay, sir. सो गोवा में जो ओवर होता है इट इज हैविंग ओनली 55-58%, है ना, इट्स अ लो ग्रेड बेसिकली। तो यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है और बहुत सारी माइंस है उसकी, 3-4 माइंस है वहाँ पर नॉर्थ गोवा में, वहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है। अभी जो बात कर रहा था मैं ऑफ द, अभी आयरन ओर तो आ गया हमारे पास, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर ऑल्सो, बट दिस आयरन ओर इज हैविंग द गैंग मटेरियल। जो आप गौरव पूछ रहे थे, दिस इज द गैंग और इम्प्यूरिटीज, है ना। इट इज अ कंपाउंड, आयरन कंपाउंड तो रहता ही है, वेदर इट्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड्स, है ना, और कार्बोनेट। अपार्ट फ्रॉम दैट there will be impurities, that is gang material, we can say gangue material. So what are these? These are silicon dioxide, manganese oxide, calcium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, few phosphorus compounds and sulfur compounds. तो जो हमारा phosphorus और sulfur कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है ना। phosphorus sulfur कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। तो फॉस्फोरस एंड सल्फर जो होता है वो हमको, ये जो कंपाउंड उसके अंदर एज ए इम्प्यूरिटीज है उसके कारण वो आ जाता है उसमें, है ना। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीज भी आता है थोड़ा सा उसमें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में रहता है और इसी के लिए लाइम भी डाला जाता है ना। तो वो क्या करता है फिर कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म करता है जो ऊपर तैरता है बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी। सो स्टिल आपको याद रखना है कि these are the various impurities present in the iron ore, and that is why the purification, that is secondary steel making, is required to remove the impurities, because in the blast furnace you cannot remove the impurities. There is no provision for removing the impurities. Whatever the majority of the impurities you can remove by way of slag generation, by reaction with the lime. But जो dissolved impurities है in the metal, dissolved in the metal, you cannot remove that one. So that has to be removed during the secondary, to a certain extent during the primary steel making, and finally in the secondary steel making. अभी आयरन ओर आपको सबको क्लियर हो गया है, वॉट एवर वी हैव गॉन थ्रू, अलग अलग टाइप के आयरन ओर, है ना, वर्ल्ड डिपॉजिट, देन डिपॉजिट्स इन इंडिया, और उसके अंदर इम्प्यूरिटीज। नाउ अगर इम्प्यूरिटीज है, अभी हमारे पास ये आ गया, बिफोर मूविंग टू द लाइमस्टोन एंड द कोक्स, वी हैव टू सी, आर वी गोइंग टू फीड द आयरन ओर एज इट इज टू द ब्लास्ट फर्नेस और इवन टू द डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन प्लांट, है ना, DRI प्लांट, क्योंकि दो जगह जाएगा। लेट अस गो टू दैट पिक्चर वन मोर टाइम। Is that complete steel making is visible to you people? Complete steel making picture, that slide? Yes, sir. Okay.
So this, at the start I told you, yesterday also we discussed, either this iron ore will go to the DRI, that is direct reduced iron plant, and then to the electric arc steel making, or this coke, limestone and iron ore will go to the blast furnace. तो iron ore कोई भी जगह जाए, whether it is going to the DRI plant, that is directly reduced iron plant, or the blast furnace, you cannot feed it as it is, as removed from the what, as removed from the earth crust. वहां से रिमूव जैसे होता है वो आप एज इट इज फीड नहीं कर सकते हो. तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डू द प्रोसेसिंग. ओके, दिस एनिमेशन इज विजिबल टू यू पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are basically nothing but a cone crusher on the left hand side. जो है वो cone crusher है, और ये जो हमको ये दिख रहा है आयरन ओर. तो आयरन ओर में आप देखो देयर इज अ लंप ऑल्सो, है ना, यहाँ पे फाइन्स भी दिख रहे हैं नहीं क्रशिंग के बाद. बट ये जो लंप्स है, कैन वी पुट ऑल, क्या वो पॉसिबल है ब्लास्ट फर्नेस में हम अगर लंप्स एज इट इज डाल देते हैं तो? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रश इट, है ना. इसको क्या करते हैं, कोन क्रशर में इसको क्रश कर देते हैं. ये एक टाइप का क्रशर ये है, एंड दिस इज अ कोन टाइप क्रशर. सो बेसिकली इसको पल्वराइज करते हैं ताकि इसको जो बाकी भी इसके साथ बॉन्डिंग रहती है इम्प्यूरिटीज की, वो भी ये हो जाए, अलग अलग हो जाए सब. और नाउ इट इज गोइंग टू द बेनिफिकेशन प्रोसेस, मीन्स रिमूविंग द अनवांटेड मटेरियल एज मच एज पॉसिबल. पूरा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो क्या है, बॉन्डिंग के साथ है, यू कैनॉट रिमूव दैट वन. सो जितना हो सकता है दैट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग द बेनिफिकेशन प्रोसेस, which is called ore processing or ore dressing. अब ore processing में क्या करते हैं, what we have to do, you have to separate the iron ore from the gangue material, but gangue material also not completely, है ना. It can remove to certain extent only, because you cannot, by crushing or something, you cannot just separate iron ore from the rest of the gangue material. but हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, और बाद में देयर आर टू मेथड्स कॉल्ड एज द फ्रॉथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन. दो मेथड ऐसी है, पर मैग्नेटिक सेपरेशन ओनली फॉर द मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटिक टाइप की जो ये है उसी में काम में आता है, एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है वो सभी टाइप के ओर के लिए काम में आ सकता है. सो व्हाट यू डू इन दैट, बेसिकली फ्रॉथ फ्लोटेशन में जो आयरन ओर के पार्टिकल्स रहते हैं, दैट विल स्टिक टू द फ्रॉथ, दैट इज जो झाग रहता है उसको स्टिक होता है और वो ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं. और जो नॉन आयरन ओर पार्टिकल्स रहते हैं वो एट द बॉटम जमा हो जाते हैं इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन. और मैग्नेटिक, या Could you please repeat it again, the froth? I have not understood froth flotation. हाँ, एक जो मेथड रहता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना. तो फ्रॉथ मीन्स बेसिकली झाग, है ना, एंड फ्लोटेशन मीन्स तैरना. सो बाय वे ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर फिनोमिनॉन, जो आयरन पार्टिकल्स रहते हैं, आयरन ओर पार्टिकल रहते हैं, दैट विल क्लिंग टू द बबल्स, है ना. एक वाटर प्लस इमल्शन बनाया जाता है, उसके अंदर फिर एयर ब्लो की जाती है, बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स द बबल एंड द फ्रॉथ. और ये जो फ्रॉथ रहता है, जो आयरन ओर पार्टिकल रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द दिस वन, दैट पर्टिकुलर यूनिट. और जो बाकी नॉन आयरन ओर पार्टिकल रहते हैं, दे विल बी एट द बॉटम, है ना. और फिर जो आयरन ओर जो बेसिक, या So how this is possible, sir? How iron ore sticks to the bubble and the non-iron particles go to the bottom?
बिकॉज जो वाटर के साथ उसकी वेटेबिलिटी कम रहती है, इट कैनॉट वेटेड बाय द वाटर, है ना, बिकॉज इट्स वेटेबिलिटी विद द वाटर इज लो, दैट्स व्हाई इट कैन क्लिंग टू द योर बबल, ओके सर, है ना, वेटेबिलिटी कम रहती है. सो इट्स अ रिवर्स. एक्चुअली सबको लगेगा कि आयरन इज अ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आयरन, वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन ओर, है ना. यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आयरन है तो आयरन तो बॉटम में रह जाना चाहिए पानी के, ठीक है ना. नो हाँ, सर, but it's iron ore. We are talking about iron ore. So it is a froth flotation process, and through that it is attached to that one. Just give me 1 minute, and I will show you the photographs basically. So that will be more clearer to you people. Just give me a minute. I will just attach a photograph. I have stopped the sharing. Just give me 1 minute. I will. Just a minute. I am just putting the photograph for easy better understanding. बिकॉज इनकी जो वेटेबिलिटी रहती है ना, जो गैंग मटेरियल है, देयर वेटेबिलिटी इज गुड, है ना. बिकॉज ऑफ दैट वेटेबिलिटी इट स्टिक्स टू द वाटर, मीन्स बॉटम पे रह जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द नॉट सो गुड वेटेबिलिटी ऑफ द आयरन ओर, वो ऊपर तैर जाते हैं. सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. Is it visible to you people? Screen? Can somebody please confirm if the screen is visible? Yes. Okay. Yes, sir. So, yeah. Can you see the photograph now? I will make it a little bit larger. Okay. So ये जो दिख रहा है आपको on the left hand side, that is a froth flotation. अभी आपको clarity आएगी, है ना. So basically यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ आपको स्टरर दिख रहा है. ओके. अभी ये यहाँ पे आयरन ओर का इनलेट हो रहा है, तो जिसमें आयरन ओर पार्टिकल भी है, गैंग मटेरियल भी है, आयरन ओर पार्टिकल, गैंग मटेरियल, इस तरह से. और यहाँ से एयर भी जा रहा है इनपुट, है ना, और स्टरर भी है. एयर इनपुट प्लस स्टरर भी है. बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स द फोम और फ्रॉथ, यू कैन से. अब आयरन ओर देखो क्या हुआ है, इट हैज अटैच टू दिस बबल्स. ये जो बबल्स रहते हैं ना, इसको आयरन ओर के पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, है ना. बिकॉज इट हैज कम आफ्टर द प्रॉपर दिस वन, जो उसको क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके जाते हैं, तब फ्रॉथ फ्लोटेशन आप कर सकते हो. एंड इट इज नॉट दैट बिग लम्प्स आर देयर, है ना. इट्स बेसिकली आफ्टर क्रशिंग इट टू द पल्वराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल बारीक बनाना, उसके बाद की बात है. आप बड़े बड़े आयरन ओर के लम्प्स नहीं डाल रहे इसमें. सो एज यू कैन सी, ये जैसे जैसे यहाँ से इनपुट आते रहता है ना, ये फ्रॉथ वाला भी चलता रहा, और यहाँ से आउटलेट है किसका, जो भी गैंग पार्टिकल है, इधर से निकलते जाएंगे. और गैस बबल, एयर बबल के कारण जो बबल फॉर्म करते हैं, दैट आयरन ओर पार्टिकल will cling to that one, and you can get iron particle here. So that this is one of the method of beneficiation or overdressing or over processing, you can say. And the second method is of what? Magnetic separation.
तो जो मैग्नेटिक टाइप की जो आयरन ओर रहते हैं, विच इज बेसिकली मैग्नेटाइट ओर जो रहता है, एज द नेम सजेस्ट, it has a magnetic property, magnetite. So that kind of ore, it will move through the conveyor, और conveyor पे क्या रहता है, ये magnetic roller है. So because of the magnet, it will come here. But यहाँ पर क्या हो जाएगा, there is no magnet here. Magnet is up to this point only, and from here there is no magnet. So what will happen? It will start falling. So after falling, you can collect it in a different hopper, and because there is no magnet in the gangue material, because of the force, because of this velocity, it will fall into this hopper. So you can remove iron ore and gangue material separately, but to a certain extent only. This doesn't mean that whatever you get after the iron processing is having only the pure iron. Still there will be silicates, the magnesium, the phosphorus, sulfur compounds will always be there. But what will happen after this? You will remove unwanted material to a certain extent, है ना. तो उससे क्या होगा कि आगे की जो प्रोसेस में हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए जो टाइम है या फिर जो क्वालिटी ऑफ द स्टील है, इट विल बी मच बेटर. ठीक है. क्या Excuse me, sir. Sir, can we get this ore processing or ore dressing PPT in your mail ID? what you want? Sir, can we get this ore processing or ore dressing PPT? Yes, sir, this will be uploaded. This will be uploaded to the website also, and if you want, I will mail you also. Okay. Okay, Kumar. Yes. Okay. Because whatever we are showing, everything will be uploaded, because every day I am uploading that the PDF file also of the presentation and the video recording also. Okay. So this is how the ore processing is done. Now जो process ore जो रहता है, उसको हमको क्या करना है? You have to make sinter and the pellet, है ना. Why basically you are doing the processing? Because you have to feed it to the, और ऐसा नहीं है कि 100% processing होता है, है ना. There will be some lumps, because you have to see the cost. If your cost benefits say that no, you can directly use the iron ore without the beneficiation, you can do so. But for the DRI plant, you will always require the pellets and the sinters, pellets or the sinters. तो आपको वो बेनिफिकेशन के बाद ही जाना पड़ेगा फॉर द डायरेक्टली रिड्यूस आयरन प्लांट. तो प्रोसेसिंग हो गया हमारा एक बार. सो वी हैव अ आयरन ओर, कोन क्रशर या जॉ क्रशर जो होता है, उससे हमने उसको क्रश किया. क्रश करने के बाद हमको जो पाउडर मिला, उसको हमने बेनिफिकेशन या फिर यू कैन से iron ore processing से we got by way of froth flotation or by way of magnetic separation, we got the iron ore, है ना, separated from the gangue material to a certain extent, not 100%. So now what we have to do, the next process is of sintering or pelletization. तो ये क्या करते हैं, अराउंड 15 मिलीमीटर के आसपास, 10-15 मिलीमीटर के लंप बनाते हैं ऑफ द आयरन ओर. ठीक है. एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज जब आप इसको ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हो या फिर अदर प्रोसेस में भी चार्ज करते हो, जहां पर एयर आप उसको अगर देना है, इफ यू वांट टू हैव द एयर फ्लो फ्रॉम देयर, अगर ये छोटे छोटे रहेंगे तो क्या होगा, वहां से जो गैप्स तैयार होती है, यू कैन हैव सफिशिएंट कैविटीज फ्रॉम वेयर द एयर कैन मूव अपवर्ड. या अगर एकदम ही बारीक रहेंगे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के, तो क्या होगा, इट विल नॉट हैव दैट. What it will not have? It will not have that sufficient cavities. और अगर बड़े करते तो क्या होगा, if we have very big why only 10-15 millimeter? Why not 100 millimeter? What will happen? What will happen if we have used very big pellets of iron ore? Anybody, any guess?
Sir, I have ज्यादा not लगेगी, understood the question. क्या लगेगा? हीट ज्यादा लगेगी। हीट ज्यादा लगेगी, या फिर और हीट के साथ साथ क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ेगा, बिकॉज आपका जो सरफेस एरिया है, यू विल नॉट गेट दैट सरफेस एरिया ना। इफ यू पुट बिग रॉक, उसका जो रिएक्शन होगा इसके साथ, एयर के साथ और कोक के बाद जो निकलता है उसके साथ जो रिएक्शन है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम, है ना। हीट भी लगेगी Yes. और साथ में इट विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस टाइम। So that's why you cannot just put big lumps, boulder inside, है ना। That's why you have to have small, because जैसे छोटा रहेगा तो क्या होगा, it will have more surface area, and more surface area will have faster reaction. तो अगर 100 मिलीमीटर का एक अगर आपके पास है, तो उसका सरफेस एरिया, एंड 100 मिलीमीटर की जगह 10-10 मिलीमीटर के 100 है, तो उसका सरफेस एरिया, या 10-10 मिलीमीटर के 10 है, उनका सरफेस एरिया, तो दैट सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी मोर। ठीक है ना, छोटों का जो छोटे रहते हैं उनके सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी मोर, है ना। तो सिंटरिंग और पैलेट हमको क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमको आफ्टर फ्रॉथ फ्लोटेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मिल रहा है, इट इज वेरी स्मॉल साइज के रहते हैं, यू कैनॉट पुट इनटू डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस और DRI प्लांट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंटर और पैलेट। और सिंटर और पैलेट कैसे बनते हैं, फाइन ओवर जो हमको बेनिफिकेशन के बाद, प्रोसेसिंग के बाद मिला, प्लस एडिटिव्स, बेंटोनाइट वगैरह नाम के एडिटिव्स रहते हैं, वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू दैट वन, है ना। बट एक एडिटिव रहता है सो दैट दे कैन बॉन्ड टुगेदर। हाउ यू विल बॉन्ड, तो आपको फेविकॉल तो डाल नहीं सकते वहां पर, तो बेंटोनाइट नाम का एक एडिटिव रहता है, इट्स बेसिकली अ क्ले, तो उसके साथ उसको बॉन्डिंग करने के लिए बेंटोनाइट क्ले डाला जाता है। एंड देन देर इज अ फाइन कोक प्लांट से जो फाइन कोक आता है उसको भी मिक्स करते हैं इसको। तो ये तीनों के कारण क्या होता है, इट फॉर्म्स द सिंटर, है ना। उनको सबको गर्म करते हैं तो क्या होता है, सिंटर फॉर्म होता है, और बड़े बड़े सिंटर बनते हैं तो उसको क्या करते हैं फिर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल स्मॉल पीसेज। आपको यहाँ पर क्रशर दिख रहा है, क्रश करने के लिए दिख रहा है, यहाँ पर नीचे ध्यान गया किसी का, क्रश के वहां पर? Yes, sir. या सो क्या हो रहा है, यू आर पुटिंग द ओर एंड कोक मिक्सचर हियर along with the additive, you have a heat, है ना। for this bonding you have to have some temperature, and then there are air vent also for cooling, hot air के बाद उसको cool करने के लिए यहाँ पर, and then it is going here for what, crushing, and crushing फिर ऐसे करते हैं कि to a particular size around 15 मिलीमीटर के आसपास की साइज में उसको सिंटर्स को बनाते हैं। Excuse me, sir. Yes. Sir, air is not blown in between center cake to cool it down further. Yeah, it is blown from here. Here you are cooling. Here you are heating it to form the bond, है ना. And Okay. you cannot crush it in the heated form. That's why the air cooling is there. Okay, It is not okay, for sir. heating. This air is not for heating. Yeah. Yes, sir, understood. Okay. And then you get the sinter. Sir, which iron ore is easy to purify? Every purification you can do with all the iron ores. Huh? There is nothing like, only magnetite is there, then you can use magnetic separation. For other iron ore you cannot use magnetic separation, जिसके अंदर magnetic property का use किया गया है. So that you cannot use. Each ore we have to use separate process. No, there is only froth flotation and the magnetic separation. But magnetic separation you can use only for the iron ore which is having magnetic property. जिसमें magnetic नहीं है तो कुछ use ही नहीं कर पाओगे आप. Yes. है ना. तो that basically froth flotation use करते हैं. Okay, sir. For all the. और जिनका परसेंटेज पहले ही कम है उसमें तो वो भी नहीं यूज करते लोग फिर, है ना. दे विल डायरेक्टली गो, बिकॉज पहले ही कम है उसमें तो, और अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, है ना, कि इट इज मच इजियर टू हैव द ब्रेकिंग डाउन इनटू देम, बट सम काइंड ऑफ पैलेटाइजेशन तो उनको करना ही पड़ेगा बिफोर फीडिंग.
और सेकंड जो रहता है हमारा क्या है, दैट इज पैलेटाइजेशन. तो वन इज सिंटरिंग, वन इज पैलेटाइजेशन. तो पैलेटाइजेशन में क्या करते हैं, जो ओर पाउडर है, ओर पाउडर और जो आयरन ओर की जो ग्रीन पैलेट्स रहते हैं उनको पूरे ड्रम में डालते हैं और फिर वाटर, बाइंडिंग एजेंट और एडिटिव्स, है ना, बेंटोनाइट वगैरह करके ही एडिटिव्स रहते हैं. वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू दैट. तो आप जब इसको गोल गोल घुमाओगे तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर क्या मिलेंगे, गोल गोल तैयार हो जाएंगे. एंड दैट इज बेसिकली पैलेट्स, है ना, स्मॉल स्मॉल पैलेट्स बन जाते हैं. और उनके साथ ही उसको फिर बेकिंग भी किया जाता है. वो जो पैलेट्स बनते हैं फिर उसको बेक करते हैं ताकि उनको ऐसे पोरोसिटी मिल जाए, है ना. बेकिंग करेंगे तभी बॉन्डिंग होगा. और जो सिंटरिंग होता है, बेसिकली सिंटरिंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस है वहीं पे वो लोग सिंटरिंग करते हैं. बट पैलेट्स नॉर्मली क्या करते हैं, जो स्पेशल और सप्लायर जो रहते हैं ना, वो उनके वहां पे बनाते हैं पैलेट्स एंड देन दे सप्लाई दिस पैलेट्स टू द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर्स और Sir, DRI ऑपरेटर. या sir, baking is a type of heating, na, sir? बेकिंग, या बेकिंग मीन्स यू आर नॉट गोइंग जस्ट लाइक, जैसे ब्रेड बनता है तो यू आर बेकिंग बेसिकली इन दैट. आटे को जब बेक करते हैं यू आर नॉट बर्निंग दैट वन, बेसिकली यू आर जस्ट बेकिंग burning. टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना. Yes. नॉट बर्निंग एट वेरी हाई, यू हैव टू जस्ट फॉर्म द बॉन्ड. दैट्स व्हाई दैट बॉन्डिंग विल बी देयर, है ना. इसका जो पर्पज है, दैट हीटिंग पर्पज इज टू फॉर्म द बॉन्ड, नॉट टू हैव एनी चेंज इन द कंपोजिशन. Okay, sir. So yeah, so that the purpose is only to have the bonding. तो उसके लिए जितना टेम्परेचर लगता है उतना वो बेकिंग करते हैं उसको एट दैट टेम्परेचर. तो ऑलरेडी 8:10 o'clock, 8:10. So should we continue with this topic or shall we take this tomorrow? What all of you think? Because it's a big one, huh? Because that DRI process, coke one is little bit more to explain. So shall we continue with the limestone or better to have tomorrow? So I think we should have this tomorrow. Yes. Yes, sir. Tomorrow. Because lot of processes you have learned today, so it should not be getting jumbled into your head. Because there are different types of ores where they are, then your gang material, then that cone crusher, jaw crusher, after that ore processing to form the sinter and the pellets. So I think we should stop this today for today's session, and then tomorrow we will continue with the limestone. Okay, limestone क्यों use करते हैं? You can easily see this one, how it forms the reaction, that calcium oxide with silicon oxide, जो silicates रहता है present आयरन ओर के साथ में, वो कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बनाता है. टुमारो वी विल स्टडी इन डीप, है ना. देन कोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, व्हाट इज कोल, व्हाट इज कोक, ओके, व्हाई कोक इज रिक्वायर्ड, दैट वी विल स्टडी टुमारो. कोक मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, that also we will study, because you should know that how coke is made, because it is one of the ingredients to the blast furnace. So you should know how the coke is made, and coke oven process कैसे रहती है, that we will see. Then comes to the DRI. अभी ये जो मटेरियल था वो कहा गया ब्लास्ट फर्नेस में, एंड व्हाट इज डायरेक्टली रिड्यूस आयरन, जो हमने वो उसमें दिखा था टॉप में, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आप भेज सकते हो उसको. तो दैट डायरेक्टली रिड्यूस आयरन और स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, वो कैसे बनता है, क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसमें भी, है ना. इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ब्लास्ट फर्नेस. ओके, इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन द ब्लास्ट फर्नेस. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स वी विल कवर इन टुमारो सेशन. So anybody has any questions, they can ask, we can discuss.
Yes, any question about today's session? This Any conference will question now about be today's session? recorded. Otherwise, we will close this session. Sir, why sintering and pelletization process is necessary? Sintering and pelletization, na? As I told you, if like in the blast furnace, just look at the picture here of the blast furnace. हाँ, ये आपको दिख रहा है अभी blast furnace का ये screen? Yes. Yeah. So now what you are doing in the blast furnace, you are putting the air from the bottom, that is through the tuer. You are doing through the you are putting air through the tuer. और जैसे हमने देखा भिलाई स्टील प्लांट का जो BF8 है, it is having 36 tuers. So you just see how much amount of air will be there pushed, and this air will go from where? It will go from upward only, and this upward when it will go, so it should have some this one the pocket should be there, or some gap should be there to move the air to the top, and when it goes, then only there will be some reactions taking place between the iron ore, coke and everything. अगर हमने वो नहीं करते हैं तो whatever the ore we get from the mine, either it will be in the very very fine form or will be in the form of very big lumps. अगर बड़े lump है तो क्या होगा, वो रिएक्शन होके आयरन ओर को रिड्यूस होके आयरन में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा. So that reaction, because that surface area will be lower. अब बड़ा lump लोगे, so that surface area will be much less compared to small ore particles. और अगर हम एकदम छोटे पार्टिकल लेंगे तो क्या होगा, इट विल बी ब्लॉक, इट विल ब्लॉक द एयर फ्लो, तो उसके कारण भी रिएक्शन नहीं होगा. फिर इट इज बेसिकली अ रिड्यूसिंग रिएक्शन. रिडक्शन होगा, इट्स इन द ऑक्साइड फॉर्म, आयरन इज इन हैविंग अ बॉन्ड विद द ऑक्सीजन और कार्बोनेट, सो यू हैव टू रिड्यूस दैट वन. और वो रिड्यूस कब होगा, जब वो कांटेक्ट में आएगा कोक के और सीओ के. बेसिकली सीओ उसको रिड्यूस करेगा टू फॉर्म द CO2, वहां का ऑक्सीजन ले लेगा. फॉर एग्जांपल Fe2O3 है, तो Fe2O3 के साथ जो ऑक्सीजन है उसको CO के साथ बॉन्ड करके इट विल बी आउट एज अ CO2. और अगर वो करना है, so that you must have the surface area of the iron ore. If you are very small, you will not get the space for air to pass through, and if you get very big lump as received from the iron ore mine, then what will happen, you will not get the surface area. Because of that, you need to have that pelletization or sintering process ना. तो उसमें क्या होगा, फिर यूनिफॉर्मिटी रहेगी साइज की. आयरन ओर जो आएगा माइन से, देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी एट ऑल. ठीक है. और उसके बाद भी अगर हम ये करने जाते हैं कि बिकॉज इफ यू डोंट डू द बेनिफिकेशन, देयर इज अ मेथड ऑल्सो. आयरन ओर आया, फिर हमने उसको क्रश किया एंड देन सीविंग से डिफरेंट साइज का आयरन ओर ले लिया. बट व्हाट विल हैपन, जो गैंग पार्टिकल है वो बहुत सारे आ जाएंगे. तो आपको गैंग मटेरियल एज मच एज पॉसिबल ब्लास्ट फर्नेस के पहले अगर निकालना है, सो यू विल डू द ओवर प्रोसेसिंग. और ओवर को प्रोसेस करने के लिए आपको उसको पल्वराइज करना पड़ता है, बारीक बनाना पड़ेगा उसको एकदम. और जो एकदम फाइन्स रहते हैं उसको आप डायरेक्ट फिर प्रोसेसिंग के बाद ब्लास्ट फर्नेस में फीड नहीं कर पाओगे. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू पैलेट और द सिंटर. then and then only you can use it in the blast furnace. That's why this pelletization is required. Pelletization will be required after the ore processing. Okay, you can use ore as it is and crush it to required size. That can also be used, but in that case the slag generation will be more and your throughput will be less. Understand. Clear?
Yes. Okay. Any more questions? Anyone? So, Any doubts? yes, sir. Yeah. Sir, in the blast furnace, the air contains nitrogen oxide, carbon monoxide, carbon dioxide plus oxygen. So that air is not blown. I think the air which have higher percent of oxygen, that that is only feeded into the blast furnace. Yeah, it will be hot air, है ना? Hot air plus this one oxygen. Why hot air? Because Okay. अगर आप direct air blow करोगे तो it will have a cooling effect because of the nitrogen. Okay, sir. तो ये क्या करते हैं? Blow करते हैं, hot air blow करते हैं along with the oxygen also. Additional. Okay. Pure oxygen will not be there. Hot air plus oxygen. Plus oxygen. Okay, sir. Any question? Philip ji, कोई question? No, sir. No, sir. So everything understood or nothing understood? हाँ समझ में आ रहा है सर. समझ आ रहा है ना? कोई issue नहीं ना session में? If at all there is some issue, you can always give the suggestion. You want to improve in the delivering this session. Okay, sir. है ना? And that recording is also available on the this one. अगर कुछ miss हो जाता है because of any issue, you can always go to the website and access the recording. Okay, sir.